अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बायो का गेस देंगे। 9th क्लास का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। बहुत से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये आप तैयार कर लेंगे तो आपका बायो का पेपर जो है वो 100% हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और ये बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिफाइन पैरासाइट, what is meant by horticulture, define paleontology, difference between biosphere and ecosystem। उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चंस को। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी और ऑर्गन और ऑर्गेनल के दरमियान डिफरेंस। डिफाइन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन मॉलिक्यूल। साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करना है, बायोलॉजिकल मेथड, डिडक्शन। डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी और डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनल। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। Define law with the example. In which forms data can be organized? Define data, give example. Why quantitative observations are considered more accurate than quantitative observations, right? Qualitative आएगा यहाँ पे misprint है। Why quantitative observations are considered more accurate than qualitative observations. Define species, define deforestation, write aims of the classification, write importance of biodiversity, write the causes of species extinctions, write characteristics of kingdom Monera, differentiate between the prions and viroids, differentiate between endangered and extinct species. Difference between chromoplast and leucoplast, define crista, define centrioles, difference in rough and smooth endoplasmic reticulum. Write short note on ribosomes, differentiate between diffusion and facilitated diffusion. Write difference in hypertonic and hypotonic solutions, define osmosis, define plasmolysis, differentiate between endocytosis and exocytosis, define active transport, differentiate between collenchyma and the sclerenchyma tissues, what is meant by nervous tissues, define turgor pressure, differentiate between phagocytosis and pinocytosis, define cell cycle, define geophase, differentiate between karyokinesis and cytokinesis, define mitotic spindle, define fragmoplates, define metastasis, differentiate between benign and malignant tumors, define metaphase plate, define the mitosis, differentiate between somatic germs line cells, define S phase, define chiasmata, define crossing over, differentiate between disjunction and non-disjunction, differentiate between necrosis and apoptosis, define meiosis to differentiate between anabolism and catabolism, differentiate between substrate and product, differentiate between prosthetic group and coenzymes, define active sites, define cofactor and write its significance, what is meant by denature of enzyme, what is meant by saturation of active site, define enzymes, define activation energy, define induced fit model, differentiate between organic and inorganic fertilizers, define eutrophaction, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है, डिफाइन मिनरल्स एंड देयर टाइप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट soluble and water soluble vitamin, define night blindness, what is meant by rickets and osteomalaria, write importance of the water, define balanced diet, write short note on proteins, define respiration, differentiate between alcoholic and lactic fermentation, what is meant by an aerobic, define glycolysis, what is energy budget of respiration. एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंसीज की तारीफ करें, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क बताएं, और ग्वाइटर से क्या मुराद है। डिफाइन एनीमिया, डिफरेंस बिटवीन क्वार्शियाकर और डिफाइन बोलस,
define stances, what is meant by alimentary canal, right function of the pericardial fluid, define stomatal transpiration, define myocardial infarction, define systole and diastole, how is plasma separated from blood, what is pus, how is it formed, define systematic circulation. Difference between arteries and veins, right functions of the xylem and phloem, what is meant by blood group system, explain preventive measures for dengue fever, explain causes of dengue fever, explain effect of dengue fever on platelets, why no skin and teeth bleed in dengue, what is dengue fever, how it spreads, which medicine should be used for dengue fever. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, कोई से दो पेयर तैयार करके जाए और 18 में से 18 नंबर हासिल करे। पहला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, विच प्रोफेशंस कैन बी अडॉप्ट आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडीज, एक्सप्लेन एनी 5, define biology and write note on its four branches, describe the relationship of the biology with other sciences, explain the following organs and organ system level, population level, community level, describe the role of Muslim scientists, write difference between प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपको इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड, राइट नोट ऑन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, राइट अ नोट ऑफ सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, एक्सप्लेन सेल थ्योरी। पार्ट 2 है जी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत बयान करें और मिसालें दें। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, discuss the kingdom Protista and Plantae, discuss taxes of taxonomy, discuss causes and effects of the deforestation and overhunting, describe the mechanism of photosynthesis, respiration, also explain energy budget, explain steps and summary of the light reaction, explain steps and summary of the dark reaction, describe and label the structure of ATP. Part 3 is to describe importance of fertilizers, describe the role of a liver in human body, write a note of dietary fibers, mention role of water and dietary fibers in food, what is malnutrition, डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद है जी व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, राइट अ डिटेल नोट ऑन डाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, write detail on structure and function of the human heart, discuss label diagram or explain the opening and closing of stomata, explain the following structure and function of the artery and vein, structure and function of RBC, what is ulcer, describe its causes and symptoms, explain the role of vitamin, discuss vitamin A in detail, discuss ABO blood group system, explain cardiovascular disorder। ये थे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये तैयार कर लें, इसमें से आपका पेपर इंशाल्लाह 90% प्लस जो है वो हो जाएगा। उसके बाद कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा पेपर के बाद कि पेपर कैसा हुआ और गेस का आपको कितने % जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।